वेटरन बैंकर केवी कामत को तो सब जानते हैं। लास्ट मंथ एट द ग्लोबल फिनटेक समिट इन मुंबई उन्होंने स्टेट किया था कि चाइनीज बैंक्स आर फार लेस डिजिटल देन इंडियन लेंडर्स नाउ। इवन दो उन्होंने एम्बार्क किया था इंडिया से बहुत पहले ऑन द डिजिटल जर्नी, इंडिया टुडे स्टैंड्स वे अहेड ऑफ देम। Indian banks keep breathless race to digitization, spurred by the government, aided by the digital public infrastructure, and hastened by demonetization and then the pandemic, is indeed remarkable and unprecedented. सिर्फ 6 years में इंडिया, जो primarily एक cash-based economy होती थी, बन गई leader in world in real-time digital payments, accounting for almost 40% of all such transactions. इस स्टैंडर्ड को अचीव करने में बैंक्स ने की रोल प्ले किया है और इनके कंट्रीब्यूशन को किसी भी तरह से अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। फिर रिसेंटली कोटक महिंद्रा बैंक ने हायर किया एक न्यू सीईओ मिस्टर अशोक वासवानी, हु वाज द फर्स्ट टू एक्वायर इन यूरोप विद डिजिटल बैंकिंग। यूरोप में वो डिजिटल एरा के पंडित माने जाते हैं। वहाँ उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पिनजेट अ डेकेड अगो, द फर्स्ट मोबाइल पेमेंट सर्विस इन द कॉन्टिनेंट। इनकी अपॉइंटमेंट रिफ्लेक्ट करती है डिजिटल एम्बिशंस ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, जो सेम एक्सटेंड में शेयर किए जाते हैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर पेयर्स के साथ भी। Indian banks have pulled out all stops in the digitization race. In July, state-owned Punjab National Bank ने announced किया launch of a virtual branch PNB Metaverse। ये ऑफर करेगी एक immersive 3D experience to customers जो perform करेंगे traditional banking activities through their digital avatars। कुछ ऐसी ही रश के बीच ये न्यूज ब्रेकआउट हुई कि एम्प्लॉइज ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियाज लीडिंग बैंक, ने टेम्पर की डिटेल्स इन बैंक अकाउंट्स अपने डिजिटल ऐप यूजर्स के नंबर को इन्फ्लेट करने के लिए, जिसने सीरियस गैप्स को फ्लैग कर दिया इन बैंकिंग डिजिटाइजेशन प्रोसेस। ये क्लियरली दिखा कि देयर स्टैंड्स अ मैसिव लैक ऑफ ओवरसाइट और इग्नोरेंस टू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। इस ब्लाइंड रेस फॉर रैकिंग अप बिग डिजिटल नंबर्स ने और कुछ तो नहीं बट लार्जली अंडरमाइन कर दिया इंडियाज एक्सेप्शनली सक्सेसफुल डिजिटल पेमेंट्स जर्नी। September 2021, Bank of Baroda, with an ambitious plan to digitize its banking, announced करता है launch of a digital banking app, BOB World, जो aim करता है provide कराना all banking services through the app under 4 key pillars: save, invest, borrow, and shop. BOB plan करता है to position BOB World as the main banking platform, added to which all other banking channels will function. यहाँ BOB follow कर रहा था SBI के footsteps को, जो integrate कर रहा था all its services on its Yono digital platform. BOB World एक ambitious और much required move था बैंक ऑफ बड़ौदा का to survive in this competitive world. But इन सारी ambitious intentions के बीच कुछ ऐसा होता है जो derail कर देता है पूरी digitization drive को। ये हुआ तब जब ये drive to add new customers on BOB World एक rat race में convert हो जाती है to meet unrealistically high targets to executives in the lower rung. तो जब ये excessively unrealistic target का pressure आया बैंक स्टाफ पे, तो बैंक स्टाफ ने start कर दिया fudging the onboarding process. A report by a news channel based on accounts of a whistleblower ने highlight किया in July this year कि कैसे बैंक स्टाफ ने devise किया एक novel workaround for a tedious process to persuade the clients। मतलब क्यों इतनी मेहनत करना कि कस्टमर्स को कन्विंस करने का ट्राई करो, सीधे से खुद का नंबर ही डाल दो अकाउंट में और कर लो ऑनबोर्डिंग का टारगेट पूरा। इन्होंने ये शुरू किया आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट से। उनके अकाउंट्स निकाले जो मोस्टली रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में रहते थे और डिजिटली टेक सेवी नहीं थे। तो ये निकालते लिस्ट ऑफ अकाउंट्स नॉट लिंक टू मोबाइल नंबर्स, फिर लिंक करते अकाउंट्स को टू एनी नंबर्स दे कुड गैदर ऑफ बैंक स्टाफर्स, सैनिटाइजेशन एंड सिक्योरिटी वर्कर्स एंड देयर रिलेटिव्स to generate the OTP one-time password needed to join the app और साइन अप कर देते हैं इन अकाउंट्स को BOB World पे from the back end। फिर क्योंकि सब अकाउंट्स में नंबर सेम नहीं हो सकता रजिस्ट्रेशन ऑन द BOB World के लिए, तो फिर ये इन अकाउंट्स को ऐप में मोबाइल नंबर का डी रजिस्ट्रेशन करते ताकि अब ये मोबाइल नंबर्स दूसरे अकाउंट्स में अपडेट हो सके। ये चलता रहता, टारगेट्स भी मीट होते रहते और जो ये कर रहे थे इनको अप्रिसिएशन, एक्कॉलेड्स एंड सर्टिफिकेट्स भी मिलते रहते अगर ये वेसल आउट नहीं होता। ये कोई छोटी बात नहीं है क्योंकि एक तरफ जब बैंक स्टाफ लिंक करते हैं स्ट्रेंजर्स मोबाइल नंबर्स को किसी भी अकाउंट से, दूसरी तरफ इट ओपन्स द डोर टू फार मोर सीरियस इम्प्लीकेशंस क्योंकि द ओनर ऑफ द लिंक्ड मोबाइल नंबर को सारा एक्सेस मिल जाता है अकाउंट का, जिससे वो पासवर्ड चेंज या पैसे विड्रॉ तक भी कर सकता है। यस, फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ दोस पुअर पीपल जिनको टेक्नोलॉजी का शायद टी तक भी नहीं आता। इनिशियली बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिफ्यूट किया इन एलिगेशंस को कि किसी ने मिसयूज किया है कस्टमर्स डाटा को टू प्रमोट इट्स डिजिटल बैंकिंग एप्लीकेशन BOB World और एम्फसाइज किया कि हम वहाँ एक फुल्ली सिस्टम ऑथेंटिकेटेड और कस्टमर कंसेंट बेस्ड प्रोसेस फॉलो करते हैं फॉर मोबाइल बैंकिंग ऐप रजिस्ट्रेशन एंड देयर इज अ स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इन प्लेस। बट फ्यू डेज आफ्टर दैट ये रिवील हुआ कि इंटरनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द बैंक्स हेड ऑफिस ने एक्नॉलेज किया है इस माल प्रैक्टिस को और आगे बताया कि बैंक के बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने इवन कैश भी विड्रॉ किया है tens of thousands of rupees from these innocent customers' accounts by using the mobile application BOB World. Around the same time, RBI ने भी बैन कर दिया BOB को from onboarding any new customers on BOB World app with immediate effect. ये एक्शन का बेसिस था ऑफ कोर्स सर्टेन मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न्स जो दिखे इन द मैनर ऑफ ऑनबोर्डिंग कस्टमर्स बाय द बैंक। मतलब RBI को भी कुछ गलत लगा इन सब प्रोसेसेस में।
लेटर इन अ प्रेस रिलीज आरबीआई ने बोला कि कोई भी फर्दर ऑनबोर्डिंग ऑफ कस्टमर्स ऑन द बीओबी वर्ल्ड नहीं होगी और ये तभी अलाउ किया जाएगा जब ये डिफिशिएंसीज जो ऑब्जर्व हुई हैं उनको रेक्टिफाई कर दिया जाएगा बैंक के साइड से टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ द रेगुलेटर। बट जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं ऐप के, उनके अगेंस्ट कोई स्टेप नहीं लिया जाएगा, जैसे ऑटो डी रजिस्ट्रेशन जैसा कुछ नहीं होने वाला बैंक के साइड से। इन अ स्टॉक मार्केट नोटिस द बैंक सेड इट विल वर्क क्लोजली विद द आरबीआई टू एड्रेस देयर कंसर्न्स एट द अर्लीस्ट। फिर कुछ दिन और निकले, बीओबी ने रिपोर्टेडली सस्पेंड किया मोर देन 60 एम्प्लॉइज अक्रॉस स्टेट्स को, including several at the level of AGMs, reportedly 11, as part of its action against the irregularities. यहाँ जिस बैंक की बात हो रही है ये कोई छोटा बैंक नहीं है पीएमसी जैसा, ये बैंक एक लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री का और केटर करता है क्लोज टू 12 करोड़ कस्टमर्स के डेटाबेस को। The bank had close to 53 million app downloads and 30 million activated users as of March 2023. Nearly 98% and 91% of savings account and current account acquisitions respectively are currently done through the digital channel, according to a report by Motilal Oswal Financial Services. Again, 58% of new fixed deposits and 42% of recurring deposits are also booked via digital channels. On the lending front also, 61% of credit cards and 89% of personal loans are sourced digitally in the bank. Even in other retail products, 67 to 68% of home and auto loans are sourced digitally. In June this year, Bank of Baroda ने एक और digital initiative announce किया था जो था interoperable cardless cash withdrawal facility, जहाँ एक customer withdraw कर सकता है cash using UPI from the bank's ATM without using debit cards. और ऐसा करके ये first public sector bank बना था to launch this innovative digital service. तो यहाँ शायद ये BOB वर्ल्ड वाले lapses ज़्यादा diminish तो नहीं करेंगे BOB के दूसरे achievements को, yet they have set alarm bells ringing and flagged the risk of a blind race to digitize banking. ये टाइम है एक्नॉलेज करने का कि बैंक्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक स्टिफ एथिकल डेफिसिट, अनरियलिस्टिक कंपटीशन एंड आर एंगेज्ड इन अ रैट रेस जो एक्सपोज करता है सेंसिटिव इंडस्ट्री को टू मेनी सच रिस्क्स इन द कमिंग फ्यूचर। आपको पता होगा जब हमें पैसा चाहिए तो हमें कोलैटरल या सिक्योरिटी देनी पड़ती है बैंक्स को, पर जब हम बैंक्स को लेंडिंग करते हैं, जब हम अपना पैसा वहाँ पे रखते हैं, तब बैंक कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं देता हमको। तो हमारे डिपॉजिट्स या डेटाबेस को सिक्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, आरबीआई की। और बीओबी को फर्स्ट केस नहीं था जहाँ डिजिटाइजेशन लैप्सेस मिले आरबीआई को। While BOB case amounts to tampering and possibly fraud by employees or business correspondents of the bank, in a different case, HDFC Bank's digital processes पे भी questions raised हुए हैं in the past. RBI had barred HDFC Bank from launching new digital banking initiatives and issuing new credit cards in 2020. फिर ये restrictions impose किए गए थे due to multiple glitches in the bank's internet and mobile banking systems over the past 2 years. और जब restrictions impose हो रहे थे, RBI ने कहा कि वो relax करेंगे norms को तभी जब बैंक resolve कर देगा इन stated glitches को। तो फिर it lifted the ban in March 2022. But जो भी हो, BOB केस highlight करता है कि ऐप ऑपरेशंस ऑफ अदर बैंक्स पे स्क्रूटनाइज किए जाए, क्योंकि काफी लोग डाउट करते हैं कि इट कुड जस्ट बी दी टिप ऑफ द आइसबर्ग एंड एक्चुअल रॉट या फजिंग बहुत ज्यादा स्केल पे हो सकता है। द मेगा ड्राइव्स टू ऑनबोर्ड कस्टमर्स टू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बाय हुक और क्रुक, जिसकी वजह से ये अब्यूज ऑफ प्रोसेसेस हुए हैं, ऑल्सो पॉइंट टू द रेगुलेटरी फेलियर। नाउ बिकॉज पब्लिक मनी इज इन्वॉल्व्ड एंड कस्टमर ट्रस्ट इज एट स्टेक, there is a demand for security audit in all banks that have mobile banking applications. कुछ हद तक इस incident का impact might slow down the banking digitization race in near term and lead to stricter processes and harder user verification. It can also dent user confidence in banking apps to some extent, but only to make users more cautious while transacting digitally. How do you look at this mishap? Please do share your thoughts in comments.